students, welcome to all of you on this channel Chemistry BSc. So student, I hope all of you are watching my videos on a regular basis who are doing BSc. So my concern is to give knowledge to you only up to BSc level. Otherwise every topic which we have discussed till now, every topic has so much in detail, but we are doing only up to BSc level. So our today's topic is F test. F test is under tests of significance. So basically there are two tests of significance. The first one is F test and another is student T test. But today we are going to study in detail only about this F test. So F test क्यों होंदा? This is the test of significance. ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਸੋ ਇਹਦਾ ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸੋ ਰੋਜ਼ੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਨਾਲਿਟੀਕਲ ਮੈਥਡ ਕੋਈ ਨਿਊ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਿਊ ਐਨਾਲਿਟੀਕਲ ਮੈਥਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਵਿਦ ਐਨੀ ਅਸੈਪਟਡ ਮੈਥਡ। ਅਸੈਪਟਡ ਮੈਥਡ ਮੀਨਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਮੈਥਡ, ਠੀਕ ਹੈ? So now how can we tell whether there is a significant difference between the new method and the accepted method? So यही question दे answer देने ਲਈ एक statistical method आया। वैसे दो methods आए ने but उन्हां विचों एक है F test method. So the F test employed to see whether there is a significant difference between the two methods for a particular determination. It is based on the standard deviation. Are you getting my point? What I am going to explain you. So there are two methods to do any particular measurement. ठीक है? एक तो आप new analytical method कोई determine कर रहे हैं, develop कर रहे हैं. एक अपने को एक standard method है, accepted method है, जिसके बारे में अपन already पता कि ये results की होंगे. सो उन दोनों मैथड ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਫॉर दैट the one test is F test. Okay, so F test is defined as the ratio of the squares of standard deviation found in two methods, placing the larger S value in the numerator so that F is always greater than 1. So simple है F test ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ F ਹੈ that is the ratio of square of standard deviation found by two methods. S, this small s represents standard deviation. S1 means first method तो जो standard deviation आई, S2 means second method तो जो standard deviation आई, but the condition is S1 square must be greater than S2 square. Why it is so? Because अगर ऊपर वाली चीज ग्रेटर होगी डिनोमिनेटर वाली टर्म तो then overall जेड़ा f है वो की होगा always greater than 1 होगा. Okay, now this method is also called variance ratio method. This is also important. The other name of F test is variance ratio method. Why it is so? Because we already studied that the square of standard deviation is called variance. So it is also known as variance ratio test. So इस तो बाद की है रजे एक टेबल बनया होया बुक दे विच for different degree of freedom and for different confidence level टेबल दिता होया corresponding different F values ने जड़ियां available ने. Okay, ये जो टेबल है ये 95% कॉन्फिडेंस लेवल दे corresponding जड़ियां values दसदा F ਦੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੇ ਆ while calculating the numericals based on this F test. Okay, so for the table given of F of two methods, we look up the first column. मतलब ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣੀ ਆ ਰਜੇ ਕਿ ਜਦੋਂ S square ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਮਾਲਰ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਣਾ column देखना for n-1 and then the horizontal row for n-1 having larger value of s square. Simple है, ਜਿਹੜਾ टेबल बनया हुआ है वो टेबल ऐदा बनया होगा,
इधर साइड की कॉन्फिडेंस लेवल नहीं, ठीक है। इत्थे की डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 2 3 4 सिमिलरली डिग्री ऑफ फ्रीडम। सो ये वाले जिहड़े हुंदे ने ऐदा जिहड़े मैं ड्रॉ कीतियां ने हुणी, ये की ने, दीज आर horizontal rows, and what are these are columns. So this you need to take care while doing numericals कि अगर s स्क्वायर की वैल्यू लार्जर है then की देखना horizontal rows पहला देखनी है, बट अगर स्मॉलर वैल्यू s स्क्वायर की फिर पहला की देखना कॉलम देखनी है। कॉलम जिहड़े वर्टिकल हुंदे ने दे आर कॉलम्स, ओके। So एक last conclusion है, the most important conclusion is if the f value calculated from this equation number first. So if the f value calculated from equation from the above equation is greater than, this is important, अगर f value इथों कैलकुलेट करन तो बाद ग्रेटर आ रही है then the table value जिहड़ी इस टेबल तो वैल्यू गिवन होगी at the selected confidence level, then the two standard deviations are significantly different, otherwise they are not, okay। So ये दो standard deviations आपस ਦੇ ਵਿੱਚ different कदों होणगीਆਂ ਜਦੋਂ f value calculate the value greater होगी than the f value given in the table, then these two standard deviations are significantly different, otherwise they are not different. Now let us try to solve the numericals based on this F test. Write down the numerical and try to solve based on the points I told you. So write down the numerical. Question है, a sample of soda ash which is sodium carbonate. This sample was analyzed by two different methods and the following results are obtained. I am writing the results. Method 1 तो जो results आए ने, x1 having bar 42.34, s1 is equal to 0.10 which is standard deviation, n1 is equal to 5, and the results obtained from method 2, they are mean is equal to 42.44, standard deviation is equal to 0.12, and the number of observation are 4. Now the question is, are S1 and S2 significantly different at 95% confidence level लिख लो चाहे probability level, and the value of f is given that at 95% probability level table value of f is 6.59. this is given, so no question mark here. So पहला तो क्वेश्चन सबनों क्लियर होना चाहिए, बिकॉज ਜਦੋਂ तक ਤੁਹਾਨੂੰ क्वेश्चन नहीं समझ लगूगा then ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਅਰਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹਨਾ। ਤਾਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਸੈਂਪਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੋਡੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੈਥਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਮੈਥਡ 1 ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਗਿਵਨ ਨੇ, ਮੈਥਡ 2 ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਗਿਵਨ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਰ S1 ਐਂਡ S2 ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਟ 95% ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਲੈਵਲ, ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ F ਹੈ ਉਹਦੀ ਟੇਬਲ ਵੈਲਿਊ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟਲੀ ਵੈਲਿਊ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਮੈਂ, ਜਦੋਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟਡ ਵੈਲਿਊ f ਦੀ ਗ੍ਰੇਟਰ ਹੋਵੇ ਟੇਬਲ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਨਾਲ। ਨਾਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟਡ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਟੇਬਲ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਕਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੈਸਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੇਟਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਿੰਪਲੀ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ, s1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਅਪਨ s2 ਦਾ ਸਕੁਅਰ
ठीक है। हुण आपां ये फॉर्मूला मॉडिफाई कर सकते हैं बिकॉज इस फॉर्मूले दे विच अपनी कंडीशन सी कि S1 की वैल्यू ग्रेटर दैन होनी चाहिए है S2 के स्केयर दे नालों, बट इत्थे जो इन्हां दा स्केयर करके देखांगे तो ओपोजिट होगा। सो इसका फॉर्मूला बन जूगा S2 स्केयर अपॉन S1 का स्केयर दैट इज 0.12 स्केयर अपॉन 0.10 स्केयर। इस दे विच कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये कंडीशन देखनी है आपां कि इहदी वैल्यू न्यूमीरेटर की वैल्यू हमेशा डिनोमीनेटर की वैल्यू के कंपैरिजन की होनी चाहिए ग्रेटर। सो इस करके आप ये वाला फॉर्मूला इत्थे की कर लिया मॉडिफाई कर लिया। सो आफ्टर सॉल्विंग दिस द वैल्यू इज 1.44। ठीक है। सो इत्थे तुसी हुण लिख लो कि S2 ग्रेटर दैन S1। सो हुण तुसी देख सकते हो कि जो F दी कैलकुलेटेड वैल्यू है वो की है इज less than table value because calculated value 1.44 table value है 6.59 तो इत्थे less than the sign आऊगा। सो इस करके इस क्वेश्चन दे विच जो स्टैंडर्ड डेविएशंस ने टेल मी क्या होगा आंसर, आर दे सिग्निफिकेंटली डिफरेंट? नो, द स्टैंडर्ड डेविएशंस आर नॉट significantly different because अगर ਇਹਦੀ वैल्यू इत्थे greater than होनी सी फिर ये significantly different होंगी, otherwise ये significantly different नहीं होंगी। so simply तुसी f ਦੀ वैल्यू कैलकुलेट करनी है, then you have to compare the calculated f value with this table value of f। So our next topic of today's discussion is a rejection of measurements, that is Q test। So basically Q test की होना, Q test is for rejection of measurements। So when a number of measurements of the same quantity are made, one of the results may be different from other। means अगर आपां replicate analysis करते हैं, रैप्लिकेट एनालिसिस का मतलब आपां एक तो ज़्यादा मेजरमेंट करते हैं तो जो अपने को नंबर ऑफ मेजरमेंट्स होंदियां ने तो उस दे विच जिहड़ा रिजल्ट्स ने उन्हां दे विच मे बी एक रिजल्ट्स की होवे बाकी रिजल्ट्स नालों की होवे डिफरेंट होवे। सो इस करके आपां नूं चेक करना कि वो जो रिजल्ट है उन्होंने आपां ने रिजेक्ट करना कि उन्होंने आपां ने रिटेन करना। रिजेक्ट करन दा मतलब उन्होंने आपां एलिमिनेट कर देना, उन्होंने खत्म कर देना। एंड रिटेन का मतलब होंदा सिंपली पंजाबी लैंग्वेज किसी भी चीज नूं बरकरार रखना। सो रिटेन का मतलब होंदा उन्होंने रखना। सो हैंस द डिसीजन हैज टू मेड वेदर टू रिजेक्ट और टू रिटेन इट। ठीक है। हुण अगर तां कॉज ऑफ एरर नोन है तां आपां वो मेजरमेंट नूं हमेशा ही रिजेक्ट कर सकते हैं। उस तो बाद अगर आपां नूं उहदा कॉज नोन नहीं हैगा तां उत्थे आपां नूं लिखना पਊਗਾ भी उत्थे आपां नूं रिजल्ट नूं रिजेक्ट करना कि आपां उहनूं रिटेन करना। ठीक है। उस बाद एक जनरल सा कंक्लूजन है कि अगर अपने को नंबर ऑफ रेप्लिकेट वैल्यूज लार्ज हों तो रिजेक्टिंग वन वैल्यू डज नॉट हैव अ सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन द मीन। अगर अपने को नंबर ऑफ रेप्लिकेट्स एनालिसिस या नंबर ऑफ रेप्लिकेट वैल्यूज स्मॉल ने तो रिजेक्टिंग अ रिजल्ट विल हैव अ सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन मीन। आप सिंपली नहीं कहते जो अपने को लार्ज वैल्यूज ने सिंपली समझ लो जो तुसी अगर थोड़े को लार्ज वैल्यूज ने तो आप उन्होंने विच अगर एक वैल्यू नूं रिजेक्ट कर देंगे तो अपने को ओवरऑल मीन पे कोई इफेक्ट नहीं पैण वाला। ठीक है। अगर अपने को वैल्यूज ही बहुत स्मॉल ने मतलब 3-4 वैल्यूज ने उहदे विचों अगर आप एक वैल्यू नूं रिजेक्ट करता उहदे नाल सिग्निफिकेंट इफेक्ट पऊगा मीन पे। ठीक है। उस बाद एक होर मैथड दिता होया इन्होंने स्टैंडर्ड डेविएशंस दे बेस पे कि अगर जिहड़े तुहाडे रिजल्ट्स ने वो फॉल कर रहे ने आउटसाइड 2s और 2.5s मीन तो उन्हां नूं आपां की कर सकते हैं रिजेक्ट कर सकते हैं। इस तो बाद एक होर छोटा सा पॉइंट दिता होया कि आपां रेंज दे बेस ते जिहड़ा डिसाइड कर सकते हैं कि आपां नूं जिहड़े रिजल्ट्स ने वो रिजेक्ट करने हैं कि रिटेन करने हैं। ठीक है। मीनस आपां एक रेंज डिसाइड कर लांगे ते ओदे अकॉर्डिंग देखांगे, बट ये भी कोई सिग्निफिकेंट फैक्टर नहीं हैगा बिकॉज जिहड़ी रेंज हुंदी आ अगर रेंज दी वैल्यू स्मॉल है हुण अगर रेंज बहुत छोटी है तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ अगर आप एक वैल्यू रिजेक्ट कर दईए तो मे बी जिहड़ी वैल्यू रिजेक्ट की है वो अपने को गुड डाटा दे रही होवे है ना। उस तो बाद अगर रेंज बहुत वड्डी है बहुत लार्ज रेंज है मतलब उसदे विच बहुत सारियां वैल्यूज ने मे बी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कुछ जिहड़े रॉन्ग रिजल्ट्स ने वो आप रखे हुए ने समझ रहे हो ना।
सो ये रेंज भी आपां नूं एक एक्यूरेट रिजल्ट नहीं दिंदी भी आपां रिजेक्ट करना कि रिटेन करना. Okay, well leave it all this is all before coming this Q test. So now we comes to our main topic. What is Q test? Q test is the most statistically correct test that has been used for a fairly small number of observations to decide whether an measurement should be rejected or retained. So Q test ਦੇ base ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ measurement ਨੂੰ retain ਕਰਨਾ ਕਿ reject ਕਰਨਾ for small number of observation. Next, this point should be noted. A measurement rejected on the basis of Q test has 90% confidence level that suspected result was rejected to some special error. That suspected result was subjected to some special error. Suspected result मतलब सस्पैक्टेड वैसे सिंपली सस्पैक्टेड का मतलब की हुंदा कि किसी भी चीज ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ Q ਟੈਸਟ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 90% ਸ਼ੋਰਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਗਲਤ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਐਕਚੁਅਲ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਰਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਨੋ Q ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ 4 ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਮਤਲਬ Q ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ पहले तो जो अपने रिजल्ट्स ने जो वैल्यूज ने जो obtain होंगी किसी भी मैथड तो उन्होंने आप अरेंज करना इन डिक्रीजिंग ऑर्डर. Then we have to calculate the range of the results. What is range? Range is simply the difference between largest value and the smallest value, and here range is the difference between largest result and smallest result. Third is calculate the difference between suspected result and the nearest neighbor. ਸਸਪੈਕਟਡ ਰਿਜ਼ਲਟ मतलब ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਓਵਰਆਲ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਆ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਸਪੈਕਟਡ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨੀਅਰੈਸਟ ਨੇਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਾਲ d ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਆ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਡਿਵਾਈਡ ਦੀ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਓ ਡਿਵਾਈਡ ਦੀ डिफरेंस डिवाइड द डिफरेंस obtained in step 3 ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਇਆ ਸਟੈਪ 3 ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਰੇਂਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸਟੈਪ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤੀ ਆ so this is the Q that is rejection quotient. So Q is the difference between small d and capital R. So ਇਹ ਹੈ Q test ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੇ methods. Now note the conclusion, that is compare the calculated value of Q with the table value of 90% confidence level, same as we did in F test. F test ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਲਕੂਲੇਟਡ F ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਟੇਬਲ F ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੇ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟਡ Q ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ with the table value. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ that if calculated value of Q is found to be greater than table result or the table Q value, then the result can be discarded with 90% confidence. Okay, conclusion सब ਨੂੰ clear ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਅਗਰ calculate value Q ਦੀ greater ਹੋਗੀ calculated value Q ਦੀ greater ਹੋਗੀ table value ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ result ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ discard ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 90% confidence ਹੈ. So this is the main conclusion of Q test. So basically Q test ਹੁੰਦਾ rejection of measurement. Q test ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ
कि अगर अपने कोल कोई रिजल्ट ने कोई रिजल्ट ਦੀਆਂ बहुत ज़्यादा वैल्यूज ने ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਸਸਪੈਕਟਡ ਲੱਗਦੀ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੋਂਗ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ ਦੇਖਣ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਟੈਸਟ ਆਇਆ ਸੀ। ਔਨ ਦੀ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਦਿਸ ਟੈਸਟ we are going to do one numerical. Write down the question. 5 determinations of the vitamin C content of a citrus fruit give the following results. That is 0.218, 0.219, 0.230, 0.215, 0.220 milligram per milliliter. Now the question is apply Q test to see if the value 0.230 can be discarded and the table value of Q is given, which is 0.64. Okay. So अपन 5 ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨਸ ਨੇ 5 ਮੇਜਰਮੈਂਟਸ ਕਹਿ ਲਓ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਦੇ ਸਿਟਰਸ ਫਰੂਟ ਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਅਮਾਉਂਟ ਹੈ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਦੀ ਤੇ ਕਿਊ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਕਾਰਡ ਕਰਨਾ। ਟੇਬਲ ਵੈਲਿਊ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਨਾਓ ਸੋਲਵ ਦਿਸ। ਦੀ ਫਰਸਟ ਸਟੈਪ ਕੀ ਸੀ? अरेंज दी वैल्यूज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। सो अरेंज करो इन डिक्रीजिंग ऑर्डर दे विच। सब तो लार्जेस्ट किया 0.230, नेक्स्ट है 0.220, नेक्स्ट है 0.219, देन 0.218, देन 0.215। सेकंड स्टेप की सी रेंज कैलकुलेट करनी। रेंज की हुंदी आ द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट वैल्यू एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू। सो रेंज कितनी होगी? 0.015. Now third point is the difference between suspected value from the nearest neighbor. The suspected value कितनी है? 0.230. So 0.230 ऐ सिंपली किया 230। 230 ਦੇ ਨੀਅਰਬਾਈ ਕਿਹੜੀ ਆ? 219 ਜਾਂ 215 ਜਾਂ 220 ਜਾਂ 218। ਸੋ 220 ਇਹਦੇ ਨੀਅਰਬਾਈ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ। 0.230 minus 0.220 is equal to 0.010। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਸਮਾਲ d ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਐਂਡ ਰੇਂਜ ਨੂੰ ਕੈਪੀਟਲ r ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ। ਨਾਓ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੇਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀ q ਦਾ q ਟੈਸਟ ਦੇ ਲਈ that is q is equal to small d upon capital R। small d upon capital R। Put the value of small d, that is 0.010, capital R, which is equal to 0.015. The answer will be 0.67. Now the table value of Q at 90% confidence level is equal to 0.64. Now compare both the value. So the calculated value, which is 0.67, is greater than the table value, which is 0.64. Now क्या होगा result? Now क्या होगा? So as the calculated value of Q is greater than table value, so the suspected result, which is 0.230 here, it can be rejected with 90% confidence. Okay, so that's how we solve the numericals based on the Q test. So
So that's it for the day, students. Thank you for all of you for giving time for this lecture.